प्लीज स्टार्ट सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, सभी को नमस्कार। और आज हम पेपर 1 शुरू कर रहे हैं और पेपर 1 में हमने एक लेक्चर पहले कर चुके हैं हम, और उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन फैमिली फॉर्म्स। In India, we have diverse type of families, varieties of family, various types of families are there in our India. And Indian family system, there is a traditional family system, modern family system, orthodox family system. Lot of concepts are there in our family system. And if we discuss about a nuclear family you people knows well. I'm just going briefly about all these things because this is not the new concept for you, and mainly I will focus on the theoretical part, theories of your family, theoretical perspective of family I will discuss in detail. But just I'm in a very brief note, I'm describing these types of concepts of family, nuclear family, extended family, all these things you know better and you can write. And particularly about this paper, maximum things are very correlated, right? You take the example of family cycle 1, family cycle 2, how family extend further, right? If we take it in Indian concept, Indian perspective, or if we take it a global perspective, right? Varieties of cycle within families going on, and if one cycle break, one cycle disturb, said then again to connect the cycle of the family system, we are to reuptake. We have to reuptake the cycle of our family system. Cycle 1, cycle 2 means varieties of cycle, means the process of family, right? Cycle means process of family, stages of family, for example, and that means the baby born, then early infancy, childhood, period, then adolescence, and automatically the teenagers, and then adult, and then automatically get married and family, and further family, further family. So automatically this is a process, this is a cycle. And finally the person who has started a new family and going to the era of end of his own existence, that means called elderly stage, non-productive age. During the productive age we carry on the process of cycling or process of family or the cycling of family, but at the end stage, that is the elderly stage, we become non-productive. So nuclear family, a family with two generations of parents and children living together in household, still most popular. आज भी न्यूक्लियर फैमिली बहुत पॉपुलर है, पर्टिकुलरली एक न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। इंडिया में मेनली हम दो तरह की फैमिली मानते हैं। ज्वाइंट फैमिली जिसे हम एक्सटेंडेड फैमिली टाइप में बोल देते हैं, दादा दादी भी होते हैं, चाचा ताऊ सब इकट्ठे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, अंकल आंटी भी होंगे, और मेनी थिंग्स। But nuclear family में with two generations of parents and children living together in one household, it is a most popular and idealistic due to media. Idealistic due to media, that means आज के जमाने में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें न्यूक्लियर फैमिली को बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। Then serial packet family, that means all peoples within the nuclear family are well connected. 34% of the families are nuclear. This is just a 34%, right? The rest of the families may be varieties of family. This is in a global perspective, because it's not Indian perspective. This is in global perspective. Now, serial packet family, what is that? The stereotype of the ideal family found in the media and advertising involve first-time married parents and their own natural children. First-time married parents. If we compare India, you go back in Sati Pratha, जब हमारी फैमिली होती थी, सपोज किसी घर में जेंट्स की डेथ होती थी तो उसकी वाइफ को भी बीच में सती होना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड सती प्रथा, राइट? तो नाउ इन आवर फैमिली फाउंड मीडिया एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व फर्स्ट टाइम मैरिड पेरेंट्स एंड देयर ओन नेचुरल चिल्ड्रन, फर्स्ट टाइम मैरिड पेरेंट्स, राइट? So you go in American Western family system, you go in Indian family system, still in India is getting maximum westernization in our family system. First time married parents and their children, or natural children, with the father as the breadwinner.
ब्रेड अर्नर जो होता है फैमिली में फादर ही रहता है, तो दिस इज ए ट्रेडिशनल फैमिली। आज का कंसेप्ट, इंडियन कंसेप्ट चेंज हो गया। विमेन इज आल्सो बिकमिंग ए ब्रेड अर्नर, राइट। वो पहले कंसेप्ट होता था हाउस वाइफ होती थी, नाउ हाउस वाइफ नहीं है, that is called a bread earner can be male and can be female, and the both husband and wife both can be there for a bread earner, and the mother is primarily concerned with the home and children। ये पुराने जमाने थे कभी, राइट, जब सिर्फ मदर को says to made only for house only, household activities were limited to the female only, and the male is to be doing all outsides of activities, external activities, that is a bread earner, we can call it a nutshell। सो आज की अगर हम फैमिली सिस्टम चेक करते हैं तो इट इज टोटली डिफरेंट, टोटली अपोजिट, बिकॉज women is getting equal rights, she's also getting right of education, right of everything, I mean, and she's earning also। new right theorists and functionalists view it as a most desirable। आज के जमाने में जो नई नई थ्योरीज के जो फंक्शनल थ्योरीज ऑफ फैमिली है, दे फोकस इट, दिस इज, ये इसकी आज के जमाने में डिमांड है, डिजायरेबल है, जरूरत है इसकी आज ऐसे फैमिली सिस्टम की। फैमिली लाइफ इज चेंजिंग वाइड रेंज ऑफ टाइप्स, दुनिया भर के फैमिली लाइफ चेंजेस हो रहे हैं, वैरायटीज ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग इन फैमिलीज, वैरायटीज ऑफ चेंजेस, राइट। एंड सो कोहैबिटेशन, दिस इज अनदर टाइप्स ऑफ फैमिली आई एम टेलिंग यू। न्यूक्लियर ज्वाइंट एक्सटेंडेड फैमिली के बाद मैं आप लोगों को ये सीरियल और आपका कोहैबिटेशन ऑफ फैमिली टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ लिटिल न्यू टर्म्स फॉर आवर इंडियन पीपल। living together without the legal bonds of marriage or civil partnership, this means the newly concepts given by the Supreme Court of India, that is called live-in relationship, live-in relationship, that is called cohabitations, living together without the legal bonds of marriage or civil partnership, this is called cohabitation। They don't have legalities, right, but now live-in relations have been legalized by the court, illegally जो लोग रहते हैं, that is called cohabitation। This is reason due to the less social stigma toward it। इसका बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मा इसके साथ, कोहैबिटेशन का बहुत सोशल स्टिग्मा है इसके साथ, कि किसके साथ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, दिस इज द सोशल स्टिग्मा। इन द पास्ट कंसीडर्ड एज लिविंग इन सिन, इसको बोलते थे लिविंग इन सिन, सिन SIN, द चीपर अल्टरनेटिव टू मैरिज, दिस इज द लीस्ट अल्टरनेट ऑफ मैरिज, right, this is called cohabitation type of family। reason for rise in cohabitation, इसके क्या कारण है कि cohabitation types of families are increasing worldwide। number one, changing role of women, not willing to take on housewife role in a particular family, no women want to get the role of status of housewife only, she won't like to a male similar to the male also, she want to take only one tag, that is a housewife, right। The first reason that cohabitation types of marriage or types of families are increasing, changing role of women is the most important significant cause of this cohabitation। Reduced functions of family, so the functionalist theories are focusing that reduced functions of families, functions of families reduce हो गया है, that means functions, you take the example of extended family and the nuclear family just focusing only on their children and the parents only, extended family are to look into all the family members of chacha tau, right, and the uncle auntie parent, the grandfather, grandmothers, all the people are to be look into, so automatically family functions reduced हो गई। पहले फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में हम अपने अंकल आंटी के बच्चों को भी, सपोज हम भाई के बच्चों को भी पढ़ाते थे, उनकी भी हेल्प करते थे, लेकिन आज हम अपने अपने बच्चों को हेल्प करते, तो हमारा फंक्शंस ऑफ फैमिली रिड्यूस्ड हो गए, हम एक सिर्फ अपनी अपनी फैमिली तक सीमित होकर रह गए। इसका एक मेन रीजन है कोहैबिटेशन, द रिड्यूस्ड स्टिग्मा, स्टिग्मा इसका रिड्यूस हो चुका है। आज के जमाने कोहैबिटेशंस की एक्सेप्टेंस शुरू हो चुकी है, कोई बात नहीं, द पीपल स्टार्टेड टू एक्सेप्ट दिस वन। देन सोशलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, सेकुलर जो सिस्टम है, सेकुलर फंक्शनल जो सेकुलर कंट्रीज है, सेकुलर जो कंसेप्ट्स है, वो इसको सपोर्ट करते हैं, कैसा होना चाहिए। राइजिंग डिवोर्स रेट, पीपल डेटर्ड रिस्क, राइजिंग डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डिवोर्स होने के बाद पीपल स्टार्ट टू कोहैबिटेट, they don't want to go for another marriage, they just have a new pair and they want to stay together, but they don't want to go for marriage, but they stay together with their understanding। reduced risk, so automatically इसमें रिस्क नहीं है कोई भी, because there is no legal bondings,
right? So there is no risk. Avoid long-term commitment. Long-term commitment कुछ भी नहीं है इसमें. Until or unless understanding is there, they'll stay together. There no understanding, they will break, right? So reconstitute it. A family in which both partners have been previously married or living as a cohabiting couple and bring with them children of a previous relationship, also known as step family. स्टेप पे फैमिली बोलते हैं, स्टेप फादर स्टेप मदर जो होते हैं उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड. पहले कभी मैरिज की, राइट, एंड देन अनदर मैरिज कर लिया, तो स्टेप फैमिली स्टेप फादर, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड टाइप्स ऑफ फैमिली. नाउ न्यूक्लियर फैमिली, बायोलॉजिकल अडॉप्टेड चिल्ड्रंस को हम न्यूक्लियर फैमिली बोल देते हैं, बायोलॉजिकल और द नेचुरल चिल्ड्रंस बोल देते हैं. बट नेचुरल चिल्ड्रंस के साथ साथ एक अडॉप्टेड चिल्ड्रंस भी आता है, नया कंसेप्ट. पहले मैंने न्यूक्लियर फैमिली बोला, उसमें जस्ट आई टोल्ड यू about the natural children, but we can add also there as an adopted children also. Adopted children are also part of your nuclear family. The couples who don't have children, for example, they can go for adoptions. So being adopted, they have their own children. So this is also called a nuclear family. The family cycle. Now I am focusing on the family cycle, a conceptual tool for understanding family development. How a family concepts develop, how a family develop. एक फैमिली का डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है, राइट? ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर आर रेयरली क्लियर कट. ट्रांजिशन होता है, स्टेज होती है फैमिली का ना, वो क्लियर कट डिफरेंस नजर नहीं आएगा. क्यों क्लियर कट डिफरेंस नजर नहीं आएगा? क्योंकि सोशल सेटअप है हमारा, ये सोशल सेटअप है, तो उसको हम एक अंडरस्टैंड मान लेते हैं, ये तो ऑब्वियसली होना ही होना था ऐसा, राइट? तो इसमें बहुत कुछ अलग सा सिस्टम नजर नहीं आएगा. दिस इज ए ट्रांजिशनल है, एक ट्रांजिशनल है, एक बच्चा है, इन्फेंसी पीरियड में है, चाइल्डहुड में आएगा. ऑब्वियसली जो बच्चा पैदा हुआ है वो इन्फेंसी से चाइल्डहुड में आएगा ही आएगा, ऑब्वियस है. तो जिसमें ट्रांजिशनल मानते हैं, बहुत बड़ा क्लियर का डिफरेंस नहीं मानते हैं बच्चों को, अच्छा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, राइट? वी कैन नॉट मार्क एनी क्लियर कट डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेजेस ऑफ आवर डेवलपमेंट इन आवर फैमिली साइकिल. So then stage tends to merge. All stages finally merge in one stage. For example, infancy, childhood, further merged into your teenage group, further merged into your adolescence, further merged into your adult. When you become adult, you forget about your infancy, you forget about your childhood, that is merged in your adulthood. When adulthood, you go to elderly age and everything will be finished there. Elderly age, a new era of life. Adolescence is a new era of life. Childhood is a dependent, infancy is a dependent, so we cannot say that is a era, right? So automatically stage tends to merge. All stages merge together. Adulthood में merge हो जाएंगे, adulthood के बाद elderly stage में सारा सब कुछ merge हो जाएगा. Several different models. There are a lot of models for family cycle or the family theory or family concepts, family school, family models. A lot of models are there who are speaking about all the types of cycle of the family. 3 generation phase, coupling, expansion and contractions. 3 स्टेजेस होती है हमारा. पहले कपल बनेगा, उसका एक्सपेंशन होगा और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा एक्सपेंशन के बाद कंट्रैक्शन होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा, हमारा एक्सपेंडेड फैमिली होगा, एक्सपेंशन बढ़ रहा है, राइट? So for example, couple, that is husband wife, and then expansion, there is another children, there is a next children, their further children, right? So automatically this is called your 3 generation phase. Family life cycle. Family system undergoes important psychosocial changes. Changes are predictable and observable. हम पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ तो इन्फेंसी पीरियड में भी आएगा, इन्फेंसी में आएगा तो उसके दांत भी निकलेंगे, बोलना भी शुरू करेगा, देन वो चाइल्डहुड में आएगा तो चलना भी शुरू, वी कैन प्रिडिक्ट, राइट? और जब चाइल्डहुड में आएगा तो बच्चा स्कूल अल्फाबेट भी बोलना शुरू करेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर दी ऑब्जर्वेबल. वी कैन सी, हम सब कुछ देख सकते हैं जो बच्चे के अंदर जो एक प्रेडिक्टेबल चीजें होते हैं, वी कैन सी प्रॉपर. एंड द साइकिल ऑफ द चेंज, the family life cycle, the child born, what development, physical, social or cognitively or psychological, emotional going on, that can be predicted or that can be seen properly, that can be observed properly. ये कभी भी जो डेवलपमेंट है लाइफ साइकिल का आइसोलेशन में नहीं होता, वैक्यूम में नहीं होता कभी भी. ये इट बीटीज इन बिटवीन ओनली और सोशल सेटअप.
Without social setup, I'm telling you predictable and observable change. We born as a dependent like a white paper. अगर हमें पेरेंट्स उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएंगे, बोलना नहीं सिखाएंगे, खाना नहीं सिखाएंगे, तो हम एक एनिमल की तरह रहेंगे। हम इंडिपेंडेंटली दो टांगों पे खड़े नहीं होंगे। हम चार, हमारे जो हाथ ये भी हमारी टांगे बन जाएंगे अगर हमें कुछ चलने की ट्रेनिंग नहीं देगा, राइट। सो सिमिलरली ये हमारा जो भी चेंजेस है प्रेडिक्टेबल है और ऑब्जर्वेबल है। नाउ फैमिली लाइफ साइकिल, this is family life cycle. Automatically family married couple, for example, we take the newly married couple. उसके बाद जो आगे नेक्स्ट स्टेप आएगा, फैमिली विद यंग चिल्ड्रन, फैमिली विद एडोलेसेंट्स, लॉन्चिंग फैमिली, एडोलेसेंट्स के बाद लॉन्चिंग फैमिली, एक नई फैमिली बनाएंगे, फैमिली लेटर ईयर्स, एल्डरली स्टेज, अनअटैच्ड यंग अडल्ट। उसके बाद जो यंग अडल्ट हो गए वो अटैच्ड नहीं रहेंगे, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव हो गए वो लोग, सो दे विल नॉट बी अटैच्ड टू रिप्रोड्यूस दिस फैमिली साइकिल। वो साइकिल सिस्टम में एक उनके स्टेग्नेशन आ जाता है, एक उनका ठहराव आ जाता है, वहां स्टॉप हो जाता है, बिकॉज नॉन प्रोडक्टिव हो गए हैं तो दे बिकम अनअटैच्ड। अनअटैच्ड डज नॉट मीन्स इमोशनली अनअटैच्ड हो गए हैं, सो दैट फिजिकली दैट पीपल बिकम अनअटैच्ड। उनका एक आइसोलेशन, एल्डरली पीपल स्टे ओनली ऑन हिज बेड, एक अपने कमरे में बैठे रहेंगे, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर करेंगे तो फैमिली लाइक नहीं करेगी, सो ऑटोमेटिकली दे बिकम अनअटैच्ड, राइट। सो दिस इज ए फैमिली साइकिल, लाइफ फैमिली लाइफ साइकिल। सो नाउ अनअटैच्ड यंग एडल्ट, मेजर टास्क टू मास्टर सिलेक्शन ऑफ ए वे ऑफ लाइफ। जो अनअटैच्ड यंग एडल्ट होंगे उनका अपना वे ऑफ लाइफ ढूंढेंगे वो लोग कि अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने हिसाब से जिएंगे। सिलेक्शन ऑफ ए पार्टनर इन लाइफ, young unattached, when a person become adult and a person become elderly, unattached, वो अपनी अलग दुनिया में ही अटैच्ड हो जाते हैं। फिर इमोशनल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, एक्सेप्टिंग पेरेंट, ऑब्जर्विंग डिफरेंशिएशन। पेरेंटल एक्सेप्टेंस तो रहेगी लेकिन डिफरेंसेस जरूर रहेंगे वहां पे, because they have their ideology, young adult, and the elderly parents have their own ideology, so this is called unattached, difference of opinion रहेगी वहां पे, right? So then what is family life cycle theory? Family life cycle theory क्या है? This is an approach to studying families. फैमिली को स्टडी करने का एक अप्रोच, एक पर्सपेक्टिव, एक पहलू है फैमिली लाइफ साइकिल थ्योरी। 1930 के आसपास, 1930s के नियर अबाउट 1930s, फैमिली डेवलपमेंट थ्योरी इंक्लूड्स टू बेसिक कांसेप्ट्स। 1930s के आसपास इस फैमिली लाइफ साइकिल थ्योरी को डेवलप किया गया और इसके बेसिक टू कांसेप्ट्स हैं। नंबर वन, द लाइफ साइकिल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल स्टेजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू रिटायरमेंट एज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली, राइट। दिस इज ए लाइफ साइकिल। हमारा लाइफ साइकिल रहेगा इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअल स्टेजेस डेवलप होगा from childhood to retirement age, right? Retirement means non-productive age. Then the second concept between this about this life cycle theory is the developmental task. Developmental task, that means the growth responsibilities that arises at certain stage in the life of the family. Growth and responsibilities एक particular stage तक चलेगी हमारा, उसके बाद हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। सपोज वी हैव ए हाइट ऑफ 5 फुट 9 सेंटीमीटर्स फॉर एग्जांपल, 5.9 की हाइट है, 5.9 के बाद एक स्टेज के बाद हम ग्रोथ रुक जाएगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली रन करने की, एल्डरली स्टेज पे जाके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक सर्टेन स्टेज, एक फिक्स स्टेज है हमारा फैमिली लाइफ साइकिल में। फैमिली लाइफ साइकिल थ्योरी ये कहती है फैमिली लाइफ साइकिल में हर इंसान का एक पर्टिकुलर फिक्स स्टेज होता है, राइट। इन्फेंसी पीरियड है फॉर एग्जांपल, बच्चा छोटा इन्फेंसी पीरियड, न्यूली बॉर्न बेबी, उसको कोई नहीं मारेगा, राइट। वो खत्म हो जाएगा। एक पर्टिकुलर स्टेज है, जब चाइल्डहुड में आएगा शरारत करेगी उसको थप्पड़ लगेगी, राइट। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसको थप्पड़ लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि बराबर का होगा। थप्पड़ मारेंगे तो उल्टा मारने का डर आएगा, बराबर की होगी, राइट। सो पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इज हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रोथ एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक पर्टिकुलर स्टेज से रिलेटेड है हमारा, राइट। एंड देन यू गो टू एल्डरली,
और जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो कहना शुरू, सारी उम्र मैं कमाता ही रहूंगा। आप कमाइए, अपने आप को देखिए, मुझे नहीं पता, सारी उम्र मैंने ठेका ले रखा है। एवरीथिंग दीज आर देयर एट योर अर्ली स्टेज। सो every stage of growth and development or responsibility is having a specific age, specific stage, and after that, that particular growth and responsibility will be over. Why study family's life cycle? हम फैमिली लाइफ साइकिल को क्यों पढ़ते हैं? सभी को पता है फैमिली बनेगी तो लाइफ साइकिल चलेगा जब तक फैमिली रहेगी। मास्टरिंग द स्किल एंड माइलस्टोन अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू द अनदर। हमारा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने की कुछ स्किल होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, इन्फेंसी चाइल्डहुड में जाएगा, उसका एक स्किल है, उसको बोलना आना चाहिए, उसको क्रॉलिंग करनी आनी चाहिए, घुटनों से बल चलना आना चाहिए, उसको थोड़ा खड़ा होकर चाहिए, फिर गिर जाएगा। वो एक स्किल है हमारा। हम उन स्किल्स को हम उसकी मास्टरी कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो वन स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर कर सके। राइट? चाइल्डहुड में आएगा, चाइल्डहुड को नहीं पता गलत क्या है और सही क्या है और गलत क्या है, उसको हम सही और गलत की ट्रेनिंग देते हैं, उसकी स्किल डेवलप करते हैं टू आइडेंटिफाई राइट एंड रॉन्ग, देन ही शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। इसलिए हमें लाइफ साइकिल को पढ़ना बहुत जरूरी है। If you don't master the life skill, more likely to have difficulty with relationship and future transitions. अगर आप लाइफ स्किल्स आपके पास नहीं आएंगे, if you don't master the life skill, so automatically you face a lot of problem in your life, future life. So all these things are having a lot of problems if we are lacking the life skills. Family life cycle theory suggests successful transitioning may also help to prevent disease and emotional or stress related disorders. Successful transition, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे बिल्कुल सक्सेसफुल हम ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें बहुत एक नॉर्मल हमारा डेवलपमेंट होगा, इमोशनल प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम बीमारी नहीं होगी, और हमें कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होगा अगर हमारा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में टोटली सक्सेसफुल हम ट्रांसफर करके हैं। डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लें, मेरे को लग रहा है फिर दोबारा से थोड़ी कोई लूजिंग होगी। हो गया? इसमें से एक हल्की सी हमिंग की आवाज आ रही है, पता नहीं, थोड़ा ऊपर करें डॉक्टर साहब, ऊपर की तरफ करें। हो गया? ठीक है, यहाँ से प्रयास करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके, थैंक यू। वीडियो रोक दूं? हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू विद वीडियो। ओके, थैंक यू। विद वीडियो? जी, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर आ रहा है। Okay, your experience through the family life cycle will affect who you are and who you become. आपका जो लाइफ साइकिल फैमिली का है वो हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आप कौन है और क्या बनना चाह रहे हैं। Until or unless you don't have any life cycle in your family, one stage to another stage पे जाने का आपका एक पर्पज होता है। You become adult, एंड इन एडल्ट पहले से ही आप एडोलेसेंस पीरियड पे आप फिक्स कर लेते हैं अपने आप को कि आपने एडल्टहुड में क्या बनना है, क्या करना है, राइट? एंड व्हाट यू वांट टू बिकम एंड हु यू आर। आपको पता चलता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपका स्टेटस क्या है फैमिली का, आपको पता चलता है कि आपके बैकग्राउंड क्या है अगर आप फैमिली लाइफ साइकिल में रहेंगे। अगर आप फैमिली लाइफ साइकिल में नहीं रहेंगे तो आपकी सारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी सोशल आइडेंटिटी डिफ्यूज हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और सोशल आइडेंटिटी फिनिश हो जाएगी तो आप क्या बनना चाहेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ना कि फैमिली के। सो लाइफ साइकिल हम फैमिली का इसलिए स्टडी करते हैं ताकि एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हमारे अंदर बनी रहे, राइट? सो जस्ट टू नो देयर आर स्पेसिफिक टर्म्स, you know the meaning of all these terms. Number one, family life cycle का meaning क्या है? Set of predictable steps or pattern and development tasks families experience over time.
एक सेट ऑफ प्रेडिक्टेबल सेट ऑफ पैटर्न है, स्टाइल है, फिक्स है स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट, राइट, जिसे हम फैमिली लाइफ साइकिल कहते हैं। एक फिक्स सेटअप है ये, और फिक्स सेटअप होने के नाते उसमें ना आप चेंज कर सकते हैं ना हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, नेचर, दो चीजें हैं, फिक्स सेटअप सिर्फ फिक्स सेट पैटर्न ऑफ लाइफ है हमारा, फिक्स पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल में दो चीजें हैं हमारा, एक नेचर एक नर्चर है। नेचर में हमारा ये आता है कि जो हम पैदा हो गए तो हम छोटे बच्चे तो बड़े भी होंगे। नर्चरिंग फैक्टर है, अगर वो छोटा बच्चा है इन्फेंसी तो उसको चाइल्डहुड होना, तो उसको प्रॉपर डाइट मिलेगी तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, नहीं तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। इफ वी गो बाय नेचर वाइज, if we born, we become adult also, we become young also, we become the adolescents also, we become teenage also. The family life cycle concepts facilitate studying the family from beginning to end. फैमिली लाइफ साइकिल हमें फैमिली को अध्ययन करने के शुरू से लेके एंड तक फैमिली स्टडी करने में हमें हेल्प देता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। देन यू कॉल फैमिली स्टेज। फैमिली स्टेज, एक फैमिली के अंदर जब हम जाते हैं तो हर फैमिली में एक स्टेज आता है। Suppose you not get married. Before marriage, you are totally devoted, connected about the family. And after marriage, you have a different set of life. So little deviation will be there towards your attention, dedication, and devotion, because there is your partner and you have to devote, dedicate to that task, right? So family stage is a time period in which the life of a family that has unique structure. टाइम पीरियड है एक आपका फैमिली स्टेज का। फैमिली स्टेज का टाइम पीरियड एक स्टेज है, फिक्स स्टेज है, एंड एवरी फिक्स स्टेज इज हैविंग एवरी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ 25 इयर्स इज ए पीरियड ऑफ टाइम। 25 इयर्स में मैरिज कर देना, 28 इयर्स, 24 इयर्स फॉर एग्जांपल, दिस इज ए फिक्स टाइम ऑफ योर फैमिली स्टेज, और उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है। देन ट्रांजिशन। Transition means the shift from one stage to another stage is called a transition. एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब हम जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। Now I am asking, coming to the main point about your theoretical component. Family in India is often understood as an ideal homogeneous unit with strong coping mechanism. Why we study family cycle? Because Indian family system को हम मानते हैं एक आइडियल होमोजीनियस यूनिट है। होमोजीनियस, सभी को बराबर, अगर घर में दाल बनी सभी दाल से खाएंगे, घर में अगर खीर बना तो सभी खीर खाएंगे, राइट। दैट इज ए होमोजीनियस आइडियल यूनिट है हमारा, सभी के लिए सेम फैसिलिटीज विद इन द फैमिली, दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस विद स्ट्रॉन्ग कॉपिंग मैकेनिज्म। फैमिली लाइफ साइकिल में, फैमिली बॉन्डिंग्स में स्ट्रॉन्ग कॉपिंग मैकेनिज्म्स होता है। एक को प्रॉब्लम होगी तो कॉपिंग के लिए सारे साथ खड़े हो जाएंगे आप। इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कॉपिंग मैकेनिज्म। इट इज ए बेसिक, कोहेसिव एंड इंटीग्रल यूनिट ऑफ लार्ज सोशल सिस्टम। जो लार्ज सोशल सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल योर नेबरहुड, योर विलेज, योर सोसाइटी, उस सिस्टम का एक ये यूनिट है, बेसिक यूनिट है, जिसमें समरसता होती है, कोहेसिवनेस होता है। कोहेसिवनेस को हिंदी में हम समरसता बोलते हैं, और इंटरनली इंटीग्रेटेड होते हैं लोग, ये आपस में वेल कनेक्टेड जुड़े होते हैं। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। शायद आप जब मूवमेंट करते हैं तो एक एडिशनल आवाज आ रही है, या तो हेडफोन को ना फ्रंट में रख दे निकाल के। नहीं, यहाँ पे नॉइस है, यहाँ पे आवाज। अभी भी है, एक हल्की सी आवाज है, या तो ये फैन की आवाज आ रही है शायद लैपटॉप की। फैन तो चलाया नहीं मैंने सर, मौसम ठीक है। नहीं, आपके लैपटॉप का जो फैन होता है ना, शायद उसकी आवाज। यस यस, हाँ फैन चलता है। हाँ, तो ठीक है। अब थोड़ी सी मूवमेंट ना, जो बॉडी आपकी हिलती है ना, तो कहीं यूजिंग है तो वहां से पे हल्की सी आवाज आती है। अब नहीं हिलूंगा सर, बिल्कुल स्टैटिक बैठूंगा मैं। अब वीडियो बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट कम करना पड़ेगी, प्लीज सर। हाँ, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दे लोग सब। स्टॉप प्रेजेंटिंग।
दिया। आप ठीक है डॉक्टर साहब, चलो अब। बिल्कुल ठीक हेलो। है, ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। सो now I am telling you about the family डॉक्टर साहब in जो the Indian system. नॉर्दर्न वाला जो सा मैसेज है इसको हटा देना। हटा नहीं अभी? बिल्कुल ठीक है, हट गया? हट गया डॉक्टर साहब, ओके। सो प्लीज कंटिन्यू सर। now Sri Ram 1993 कुछ कहते हैं, the family, about the family is the basic and important unit of society because of the role it plays in generation of human capital resources and the power that is vested in it to influence individual, household and community behavior. ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट है, जनरेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स। दिस इज ए ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, फैमिली इज ए ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, जो हमें फर्दर हमें इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे और कम्युनिटी बिहेवियर। सो families in India are undergoing vast changes like increasing divorce, separation rate, domestic violence, intergenerational conflict, social problem, drug abuse, juvenile delinquencies, etc. Lot of changes we are facing, lot of tremendous changes are happening in our family system in India. Lot of problems. These changes indicate the inability to cope with the pressures of the modern life. The modern lifestyle is the root of the modern problems facing in our family system. For example, your divorce, your separation, domestic violence, social problem, drug abuse, many things, generational gap. One generation to another generation, a lot of gap is there. And to bridge the gap is quite difficult because modernization is the main problem of our generation. Family may be broadly defined as unit of two or more persons united by marriage, blood adoption, or consensual union, in general consulting a single household, interacting and communicating with each other. This definition is given by your Desai 1994. This is the definition of family, what family is. Now, this is particularly a family cycle. Family cycle. This is a family unit and unity and stability, individual development. There are two concepts: family unity and stability. फैमिली यूनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हमारा फैमिली साइकिल के बेस पे हमारा एक यूनिटी एंड स्टेबिलिटी रहता है और एक हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट रहता है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट और यूनिटी और स्टेबिलिटी के साथ साथ उसके आगे जाके इम्प्लीकेशंस निकलती हैं दोनों। इन दोनों से कुछ इम्प्लीकेशंस आता है हमारा, इसके आउटकम, इसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं। उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? एक फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप होता है। फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली यूनिटी एंड स्टेबिलिटी और या फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट का एक आउटकम आएगा, एक रिजल्ट निकलेगा, इम्प्लीकेशंस। और उस इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप होगा। फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें क्या होगा? एक रोल, पावर और स्टेटस डेवलप होगा और एक फैमिली रिलेशंस डेवलप होगा। राइट? जब एक फैमिली स्ट्रक्चर होगा उसमें एक रोल भी होगा, कोई पावर भी होगी और कोई स्टेटस भी होगा। और रोल, पावर, स्टेटस के साथ साथ वहां फैमिली में फैमिली रिलेशंस भी होंगे। उसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी होगी फैमिली का, फैमिली कंपोजिशन भी होगा, एक्सेंट ऑफ अर्बनाइजेशन भी होगा। राइट? जब आपका रोल, पावर और स्टेटस होगा वो ऑटोमेटिकली एज और जेंडर के हिसाब से वेरी करेगा। रोल, पावर एंड स्टेटस दैट विल बी वेरिएबल, वो वेरी करेगा, भिन्न भिन्न होगा। एक एज में एक अलग रोल होगा, एक पावर होगी, अलग स्टेटस होगा। एक जेंडर है तो उसका अलग रोल होगा, एक जेंडर है तो उसकी अलग पावर होगी, एक जेंडर है तो उसका अलग स्टेटस होगा। राइट? अगर हम एज के हिसाब से रोल, पावर, स्टेटस को देखते हैं, स्टेटस ऑफ एज एंड चाइल्ड एंड वीमेन, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एज, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल बाय जेंडर, स्टेटस ऑफ ए मैन और स्टेटस ऑफ ए वीमेन, जेंडर वाइज एक हम रोल, पावर, स्टेटस का, एक बच्चे का रोल अलग होगा, एक जवान बच्चे का रोल अलग होगा, एक बुजुर्ग का रोल अलग होगा। सो ये एज के अकॉर्डिंग हमारा रोल चेंज होगा और जेंडर के अकॉर्डिंग हमारा रोल चेंज होगा, स्टेटस भी चेंज होगा, पावर भी चेंज होगी। उधर जब हमारा फैमिली रिलेशन डेवलप होगा तो फैमिली रिलेशन कैन बी डायरेक्ट रिलेशनशिप और द किनशिप रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब दे आर ए कंसेप्ट DYAD, दैट मींस टू पीपल, it will be only within two people or a kinship relationship,
किनशिप में रिश्तेदारियां बनेगी हमारी वहां। फैमिली रिलेशंस केवल दो लोगों के बीच में है या आगे जाके रिश्तेदारियां भी बन रही है हमारी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर ट्री ऑफ योर फैमिली, एक जीनोग्राम अबाउट द फैमिली साइकिल। नाउ आई एम गोइंग टू द थ्योरीज ऑफ family, the theoretical perspective of the family. Human society is evolving a society, evolution है सोसाइटी का। पहले हम जंगलों में रहते थे, पहले हम एक चिंपैंजीज की तरह थे, पहले हम एक बंदर थे, पहले हम एक फिश थे, राइट। सो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन। वी आर द आउटकम ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, पहले हम जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे करते आग हमने बनाई, तो फिर खाना पका के खाने लग गए, तो आज हम एक मॉडर्न फैमिली में आ गए, मॉडर्न लाइफस्टाइल में आ गए। तो स्ट्रक्चर है चेंज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस फ्रॉम हंटर गैदरर सोसाइटी टू द एग्रीकल्चर सोसाइटी। पहले हम शिकार करके खाते थे, हंटर गैदरर था, शिकार करके खाते थे, आज हम एग्रीकल्चर करके हम खाना खाते हैं, राइट। सो एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो गया अकॉर्डिंगली। The structure of the basic social unit of human society, which is the family, evolves in response to the changes which takes place in society. सोसाइटी के अंदर अंदर जो चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसको फैमिली भी अफेक्ट होगा। फैमिली एंड हाउस होल्ड दो चीजें होती है हमारी, एक फैमिली होता है, एक हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड इज ए वन ऑफ द सेवरल डायमेंशंस ऑफ फैमिली। फैमिली एक है, हाउस होल्ड आगे डेवलप होता है फैमिली से, और हाउस होल्ड वन ऑफ द सेवरल डायमेंशंस ऑफ फैमिली। फैमिली के दुनिया भर के डायमेंशंस होते हैं, तो हाउस होल्ड एक उसमें एक आता है, एक डायमेंशन है फैमिली। इकोनॉमिकल डायमेंशंस होगा, राइट, सोशल डायमेंशंस होगा, रिलीजियस डायमेंशंस होगा, और उसमें एक हमारा पर्टिकुलरली हाउस होल्ड डायमेंशंस आता है, घर के काम करने से संबंधित। हाउस होल्ड इज ए रेजिडेंशियल यूनिट। हाउस होल्ड इज ए रेजिडेंशियल यूनिट। हाउस होल्ड रेजिडेंशियल यूनिट मींस घर से संबंधित, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फैमिली। फैमिली तो एक ह्यूमन रिलेशंस है ना, रेजिडेंशियल है तो मकान भी आ गया, उसमें ह्यूमन रिलेशंस कुछ नहीं आता। सो हाउस होल्ड इज ए रेजिडेंशियल यूनिट। रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब है चार दीवारियां, हमारा घर, हमारे 3 बेडरूम 4 बेडरूम 1 बेडरूम जो है, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल यूनिट। टोटली ये डिफरेंट है हमारा फैमिली से। फैमिली तो हमारा इन पर्सनल रिलेशन आता है, इसके साथ हमारा इन पर्सनल रिलेशन नहीं होता, हमारा एक हमारा कमर्शियल रिलेशन है घर के साथ। A household includes all the person who occupy a housing unit. हाउसहोल्ड में जो जो लोग उस घर के अंदर रहते हैं उनका हाउसहोल्ड बोलते हैं। नाउ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फैमिली इन इंडिया। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फैमिली इंडिया में हमारा आ जाता है हमारा प्रोक्रिएटर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ओरिएंटेशन फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ज्वाइंट एक्सटेंडेड एंड न्यूक्लियर फैमिली। So extended family, joint family, extended family, nuclear family, these are the traditional form of your Indian system. Similar to the family types, India has a various types of marriage system. Marriage system alag alag. A social institution, family is a social institution. Marriage is a part of the family. The institution marriage regulates the relationship between one or more, or one man to more women, and provides for the creation of family. The word monogamy and polygamy. Monogamy refers to the marriage of one man and one woman. Polygamy includes two systems, namely polygamy and polyandry. Polygamy marriage occurs when a one man marries two or more women, right? Polygamy और polyandry रिवर्स है दोनों का एक दूसरे का। ये हमारा मैरिज सिस्टम बता रहे हैं हम आप लोग, इंडियन मैरिज सिस्टम। फैमिली डायनामिक्स, मैपिंग फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली डायनामिक्स में विद इन द फैमिली व्हाट आर द इंट्रा फैमिली रिलेशनशिप? This is called family dynamics. Family dynamics are the pigments of relating to members in a family. एक हमारा pigments है हमारा, ये एक हमारा web of relations है हमारा family dynamic, determined by the daily interactions between them. This is the web of relations within the family जो हम daily activities करते हैं family में, and the daily activities, daily relations of our family interactions, daily interactions are indicating family dynamics. Family dynamics also refer to the ever changing needs of the members within a family. जो चेंज होगा फैमिली में वो एक फैमिली डायनामिक्स का पार्ट होगा। We change with time and are influenced by the macro level changes. मैक्रो लेवल पे जो चेंज होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है चेंज, राइट। एक बच्चे के मैरिज होगा, वो
वो कल को सेपरेट भी होगा, वो कल को नौकरी करने की अलग जाएगा, अलग मकान लेकर आपको अलग एक अपना घर बना देगा। दिस इज a change within family, right? So dynamic फैमिली रिलेशंस तो रहेंगे हमारे, बट एक यूनिट अलग बन जाएगा, राइट? सो फैमिली थ्योरीज वर्सेस अदर थ्योरीज, criteria for evaluation of family theories. The purpose of presenting this section is to make you as a researcher aware about the criteria that helps to develop a critical capacities about family theory. Criteria for evaluating family theories is given by Kellin, K-L-E-I-N 1994 as under: number one, internal consistency. Internal consistency, how consistently we are internally connected. This is called internal consistency, right? The family theory does not contain logically contradictory assertions. Family does not mean having any contradictions, assertions. We will not be any assertive on our contradiction. अगर एक लड़ाई हो गई है तो कल एक दूसरे को हम आपस में बुलाना शुरू करते हैं विद इन फैमिली मेंबर। असर्ट नहीं करेंगे, हम फिक्स नहीं रहेंगे कि नहीं तेरी मेरी लड़ाई होगी तो मैं तेरे से बोलना ही नहीं, तो दैट इज वी कैन नॉट असर्ट। देन चैरिटी और explicitness, then clarity and explicitness, clarity होगी और we will explain everything. Family theories are defined and explicated wherever necessary. जो family theories है they are explicit है, explain करती है and they are very clear. Explanatory power, family theory explains well what it depends to explain. Family power explanatory है, वो explain करेंगी that what it is intended to explain. Then coherence, cohesiveness है family theories हमारी, आपस में family theories जो हमें सिखाती हैं उसमें हमें समरसता डेवलप होती है। Family theories are integrated and interconnected. They family theories are cohesive, समरसता है, सब एक दूसरे से connected हैं। और family theories further having understanding. Family theory provide a comprehensible sense to examine the complete phenomena. The holistic phenomena is to be examined by all the theories. Like there is a one phenomena of marriage, for example. All the family theories are to examine and understand the concepts of family theory. So, empirical fit. Empirical research. Research-wise, all the family theories are completely suitable. Any theory can be go for empirical research. Then testability. Any theory can be testable. आप किसी भी थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, और उसके एविडेंसेस अवेलेबल होंगे, सपोर्टिव एविडेंसेस अवेलेबल होंगे कि दिस थ्योरी इज गुड, दिस थ्योरी इज वैलिड और नॉट। देन ह्यूरिस्टिक वैल्यू, every theory can generate considerable research and intellectual curiosity. Heuristic means उसमें कुछ न कुछ intellectual worth है, और जो intellectual curiosity होती है उसको पढ़ने के लिए हर theory में। Groundedness, family theory has been built up from the detailed information about event and processes observable in the world. Complete संसार में जो भी कुछ happening होती है with related to family, सो उसके बेस पे ही एक फैमिली थ्योरी डेवलप की जाती है। Contextualization, contextualization means every family theory is having related to a specific context. Specific context in terms of your historical context, interpretive and sensitive context. Family theory reflect the experiences practiced. So हर थ्योरी जो फैमिली थ्योरी है वो एक कंटेक्स्ट होगा, एक फैक्ट होगा, फैक्ट बेस्ड फैमिली थ्योरी डेवलप होगी। सो डेवलपमेंटल थ्योरी, developmental family theory contains three complementary theoretical approach which are internally related. Developmental theory. Number one, individual lifespan theory. डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर तीन तरह के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नंबर वन, इंडिविजुअल लाइफ स्पैन थ्योरी। इट फोकस ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट बट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इंडिविजुअल लाइफ स्पैन थ्योरी है that focus on the individual development
बट विथ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल नॉर्म से बाहर होकर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। और एक हिस्टोरिकल पीरियड है हमारा, बिकॉज एवरी डेवलपमेंट इज एज रिलेटेड, स्पेसिफिक पीरियड है हर डेवलपमेंट। सो सोशल नॉर्म से इंडिविजुअल लाइफ स्पैन थ्योरी ये कहती है हम जो भी जब डेवलप करेंगे लाइफ में, लाइफ स्पैन का मीनिंग होता है पूरी, सपोज किसी की जिंदगी 90 साल की है, सो 90 ईयर्स इज कॉल्ड ए लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एज। सो इंडिविजुअल लाइफ स्पैन थ्योरी ये कहती है इंडिविजुअल जब डेवलप करेगा, दैट डेवलपमेंट विल बी हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ सोशल कंटेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सेकंड, फैमिली डेवलपमेंटल थ्योरी। एक तो इंडिविजुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, एक फैमिली डेवलपमेंट थ्योरी है। इट फोकस ऑन सिस्टमैटिक एंड पैटर्न चेंज फेस्ड बाय द फैमिली। फैमिली डेवलपमेंट थ्योरी, फैमिली का भी डेवलपमेंट होगा ना, वो एक सिस्टमैटिक, जब फैमिली के मेंबर ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, तो फैमिली ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, दैट इज ए सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। देन लाइफ कोर्स थ्योरी थर्ड, it focus on the individual and increasingly use the family context to examine the event history of individual life, for example life, divorce or fertility. This is a life course theory means हमारी जिंदगी में हम एक सोसाइटी में हैं, एक फैमिली के मेंबर, और फैमिली के मेंबर होते होते हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या क्या होगा वो हमारा एक्सप्लेन किया जाएगा लाइफ कोर्स थ्योरी के द्वारा। Life course theory is based on what happening in our life. For example, divorce and fertility is the example of our life course theory. All the three theories above are interacting with each other. Individual, family और life event, तीनों एक दूसरे से connected है हमारे। Then we focus on the system theory. System theory is simply some part of the world singled out of attentions whose part interact according to the White and Klein, WHIT, White and Klein, KLILEIN 2008. They define system theory. White, WHIT, White and Klein, KLEIN, Klein 2008. A system is a unit that can be distinguished from and that affect the environment. एक सिस्टम है, एक यूनिट इज ए सिस्टम जिसको हम एक डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं और वो एक हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। हर फैमिली का एक सिस्टम, that is a unit, right? Academic system है, that is unit. Religious system है, that is a unit. So the foundation for family theory comes from two perspectives. One is the organic of evolutionary perspective. Spencer, Spencer, Spencer 1980 evolutionary perspective एक सिस्टम थ्योरी को जनरेट करता है जो फोकस करता है यूनिवर्स एज ए कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस। जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है। सो द सिस्टम थ्योरी इज नॉट ए रियलिटी बट ए वे ऑफ नोइंग। सिस्टम थ्योरी को रियलिटी नहीं है बट इट इज ए वे ऑफ नोइंग। हम एक सिस्टम को समझने का एक तरीका है सिस्टम थ्योरी, और कुछ भी नहीं है। बट द सोशल सिस्टम और द फैमिली सिस्टम, उस सिस्टम को समझने का तरीके को हम सिस्टम थ्योरी बोलते हैं, राइट? द प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच, नंबर 1, इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तभी हम एक दूसरे के सिस्टम को समझ पाएंगे। उसका सब सिस्टम आगे जाके है। इन ए फैमिली देयर आर वेरियस सब सिस्टम फंक्शनिंग। सब सिस्टम है, एक बच्चा है, उसका आगे एक ग्रुप है, पीयर ग्रुप के साथ जाएगा तो बच्चा अच्छा ग्रुप अच्छा बनेगा, बुरा ग्रुप बुरा बनेगा, तो ऑटोमेटिकली फैमिली इफेक्ट। उसके नौकरी कर रहा है, नौकरी करती हुई अच्छी तनख्वाह मिलती तो फैमिली इफेक्ट होगी, कम तनख्वाह मिलती फैमिली इफेक्ट होगी, राइट? पढ़ाई ठीक कर रहा है तो फैमिली अच्छी डेवलप होगी। ये सारे सब सिस्टम है हमारे फैमिली के अंदर। सो इंटरडिपेंडेंट होता है फैमिली सिस्टम के अंदर। प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ फैमिली सिस्टम इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द फैमिली। फिर आगे इंटरडिपेंडेंस के बाद एक हमारा सब सिस्टम डेवलप हो जाता है। हर इंसान का एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं हम सब सिस्टम ऑफ फैमिली सिस्टम, राइट? सर्कुलेटरी और सर्कुलर चेन रिएक्शन। सर्कुलेशन होता है हमारा, सर्कुलेशन है वन फैमिली मेंबर इन व्हाट दैट इन्फ्लुएंस टू अदर, राइट? दिस इज सर्कुलेशन। द इंफॉर्मेशन सर्कुलेट फ्रॉम वन टू अनदर। देन equifinity system. Equifinity system, if one subsystem does not work, the families try to different types of subsystem.
इक्विफिनिटी का मतलब ये होता है जब एक सब सिस्टम ऑफ फैमिली का काम नहीं करता। मान लो एक बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा है एक स्कूल में, उसका स्कूल चेंज करते हैं। एक बच्चा मेडिकल में ठीक नहीं चल रहा तो उसको आर्ट में चेंज करते हैं। तो वी आर टू चेंज द सब सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ आवर फैमिली। द नेक्स्ट है हमारा सिस्टम थ्योरी का कम्युनिकेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली। दिस इज द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी। देन द फैमिली रूल्स। Every family is a rule and regulation. So automatically every family member are to be bound to follow the rule and regulation. Then types of system theory. Social exchange theory, number one, types of system theory. Social exchange, we have to exchange social. सोशल रेसिप्रोसिटी रखनी पड़ेगी हमें, सामाजिक आदान प्रदान चलता रहेगा हमारा। तो सिस्टम थ्योरी का पहला टाइप है सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सामाजिक आदान प्रदान। अगर हमारा सामाजिक आदान प्रदान नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ थ्योरी हमारा फेल हो जाएगा, राइट। और सामाजिक आदान प्रदान के साथ साथ हमारा उसके अंदर एक रैशनैलिटी होगी, तर्क वितर्क होगा, रिवार्ड एंड कॉस्ट होगी। सामाजिक आदान प्रदान कर रहे हैं तो हम रिवार्ड एंड कॉस्ट को चेक करते हैं। अगर हमने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिवार्ड एंड कॉस्ट। प्रॉफिट और मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा और उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होगी। ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल, ह्यूमन ग्राउंड पे वो हमें कितना बेनिफिट करेगा, सोशल ग्राउंड पे हमें कितना बेनिफिट करेगा, राइट। मान लो एक गरीब घर का बच्चा अमीर घर में पैदा होगा, अमीर घर में मैरिज कर लेता है, तो ह्यूमन एंड सोशल दोनों ग्राउंड पे उसका एक इफेक्ट होगा, फाइनेंशियली भी बढ़ेगा और सोशल स्टेटस भी फैमिली का इंप्रूव होगा। टाइप्स ऑफ सोशल एक्सचेंज थ्योरी, नंबर एक माइक्रो एक्सचेंज थ्योरी। इट अज्यूम द इंडिविजुअल द एक्टिव यूनिट ऑफ एनालिसिस। इंडिविजुअल लेवल पे जो होगा, इंडिविजुअल लेवल पे सपोज लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है, दैट इज ए माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे इन दिस एक्टिव यूनिट ऑफ एनालिसिस द सोशल ग्रुप, कंप्लीट फैमिली लेवल पे जो होगा दैट इज कॉल्ड मैक्रो। माइक्रो लेवल पे स्मॉल लेवल पे हैपनिंग होगा, दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे जो होगा सोशल एक्सचेंज थ्योरी पे इंडिविजुअल क्या आदान प्रदान करता है और मैक्रो लेवल पूरी फैमिली क्या आदान प्रदान करती है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो लेवल। स्ट्रक्चरल फैमिली थ्योरी, सो स्ट्रक्चरल सिस्टम फैमिली थ्योरी के बाद स्ट्रक्चरल फैमिली थ्योरी है। एवरी फैमिली इज हैविंग ए स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा क्या होता है, एक समाज है, समाज में हमारा कल्चरल सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम है, एक पर्सनालिटी सिस्टम है, दैट इज इंडिविजुअल सिस्टम। कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम। कल्चरल सिस्टम क्या होता है, शेयर्ड सिंबल्स होते हैं और उसका शेयर्ड मीनिंग होता है। कल्चरल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम के शेयर्ड सिंबल मतलब अगर एक भगवान की मूर्ति देखेंगे तो आप उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, दैट इज ए शेयर्ड सिंबल, सभी हाथ जोड़ेंगे और उसका कोई मीनिंग है शेयर्ड कल्चरल सिस्टम, राइट। सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम में हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप है और एक हमारा इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप है सनातन धर्म, ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप है पतंजलि, ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप है इंस्टीट्यूशन पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप इंस्टीट्यूशनल है हमारा IITs, IIMs, दिस इज ए ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिस्टम। देन पर्सनालिटी सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम में स्पीसीज है हमारा, स्पीसीज मींस हमारी जनरेशंस है इंडिविजुअल लेवल पे हमारा, दिस इज कॉल्ड सोशल वर्ल्ड। स्ट्रक्चरल फैमिली फंक्शनल थ्योरी इज हैविंग ए सोशल वर्ल्ड एंड ऑल दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी इज कॉल्ड ए एक्शन थ्योरी। एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के बेस पे हर आदमी एक एक्शन करता है विद इन द फैमिली मेंबर। देन द फेमिनिस्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी गॉर्डन GORDON गॉर्डन 1979 define feminist theory and analysis of women's subordinations for the purpose of figuring out how to change it. That means the role of a female in the family. This is called feminist theory. This is not different from other theories, but ideologically this is a little different. Types of feminist theory: liberal feminism, then socialism feminism, then cultural and anthropological feminism, liberal feminism, socialist feminism, and cultural feminism. Then bioecological theory. Bioecological theory in 2005
यूरी बायोफ्रेंडनर इज द नेम ऑफ पर्सन जिसने इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के बारे में बोला है। बायोलॉजिस्ट एमनेस्ट हैकेन, एम्स्ट हैकेन, HEMEST HECKEN use the term of ecology. Individual and group are both biological and social in nature. बायो इकोलॉजिकल थ्योरी का मीनिंग है जो व्यक्ति और जो ग्रुप है वो बायोलॉजिकल सोशली एक कनेक्टेड है, उसकी एक बायोलॉजिकल नेचर एक सोशियोलॉजिकल नेचर। इस थ्योरी के हिसाब से एनवायरनमेंट इज बोथ spatial and biophysical, that is development of the human being depends on the nature nurture interaction through the gradual process of adaptation. बायोइकोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि एक इंसान का डिपेंड करता डेवलपमेंट नेचर नर्चर की इंटरेक्शन, और एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। नेचर नर्चर के प्रोसेस के हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट करना सीख जाते हैं धीरे धीरे, राइट। सो दिस इज biological theory, bioecological theory. So with this I am finished. Hello. Yes. Sir, actually I asked a question in the message section, like what's the major difference between joint and extended family? Yeah, good question. डॉक्टर साहब एक बार ना स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देना। एक सेकेंड में भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। ओके, थैंक यू सर। Joint and extended family, okay. Yes, joint sir. family, you know, we have in joint family we have father, we have mother, we have children, we have grandfather, grandmother. This is a joint family. Okay. Extended family, if you go beyond that, uncle, auntie, bua, and all these they are in one family. This is called your extended family. Extended family, if you go beyond your own family. Joint family, your family. Okay. So extended family includes all the uncles and Yeah, aunts. yes, definitely they are to be there. Okay. Okay. Thank you, sir. Hello. Yes. Sir, good morning. I have Rashmi ji, good morning. Yesterday you were saying, yesterday Yes, questions sir. ki suppose somebody is not taking any responsibility of any abnormality and he is making responsible someone else. Yes. Am I right? Yeah. Yesterday I stopped your questions there and I told you I'll reply you tomorrow. You Yes. raised the questions that somebody in the family is the abnormal one, creating a problem, but he is not accepting his own fault. Am I right? Yes. Unable to accept. Yeah, unable. Yeah, this is the reason that I Yes. mean to say, I Yes. told you, whenever we have any good behavior or a bad behavior, is to be learned by observational learning, learned by from external sources from the society. So obviously, Yes. we are to blame other people who taught a good behavior or a bad behavior. This is the individual who accept bad or good behavior and he or she denying due to the only social stigma. सपोज मैंने शराब पीनी शुरू कर ली, मैंने शराब Yes. पीनी मेरे दोस्त के कहने से शुरू करी है, मैं कहता तो मैंने तो पी नहीं, मेरे दोस्त ने पिलाई है, but there is some consent of myself is also there. So when I am to accept this one, yes, I am also responsible along with my friend. So this is Yes. denial of acceptance is totally a defensive one. Defense mechanisms I am adopting that I am not faulty. Some people compel me and I did that one. And automatically when we are in counseling, everybody can deny this is not my problem. Somebody has given responsible for this. Most of the people are saying, because there is not a single problem which is generated from self. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, today's discussion, I have one doubt. I ask.
Hello. Yes. Sir, from your today's class discussion, I have one query. May I ask you? Yes, please. Hello. Little loud, little loud. Yes. Yes, sir. Sir, today in the social identity depends, you told us social identity depends on family, right? That means a person has a family, they have their specific social identity. Am I right? Individual is Yes, having sir. a social identity. Yes, social identity depends on family. You just give this statement on today's class, right? You know, Hello. I'm correcting you. Yes, sir. I'm correcting you. Social identity Yes. is an individual identity, and individual identity, you being the part of your individual family, there are 5 members in the family. Each individual is having a social identity, right? Individual identity, for example. So family is depending on the entire identities of the family members. Yes. It's not individual No. one. Yes. Okay, okay. But sir, there are people in our society, they are very reputed, very socially acceptable, but they are not married one, they do not have families. So this is also social identity we can ask, consider. Just one Am I minute, right? 1 minute. Can you repeat? In society there are people who are not married, Yes, but they have no family, but the highly but accepted and very, even then, if you know, I told you this yes, social behavior can never be happen in your vacuum, in your isolation. You either married or single, you are the part of society. Family, there is a you can define the group is a group is called a is family is a unit of society, and two or more people called group. Two or more people, right? If we are yes, individual identity, individual, we have to be recognized, then we cannot say individual people is having a family. So individual yes. identity automatically there, whosoever is not married or married, whatever. Family is an extension of our individuality. But there are people, suppose you can consider monks. Monks, they are highly populated, highly acceptable. Society is giving them a specific platform, but they have no family, they have no, they are not married. So we cannot say they have no social identity. Madam, I am telling you, individual identity and social identity both are separate. Social identity, when we are correlating ourselves with society, this you get a social identity, right? Monk is a social identity, and within the Yes, monk society there are the hierarchies of the monk. That is your individual yes, identity. Monk is a social identity, it's not individual yes, identity, yes. right? So Okay, okay, individual okay. can have their identity, and a monk become a prime minister, for example, right? Being a Yes, monk, yes. he is a social identity, and the prime minister is a individual identity. Thank you. Clear. Thanks a lot, sir. Thank you. Welcome. Hello, Yes, sir. Good morning. Lily this side. Lily ji, एक मिनट my एक मिनट. Sure, sir. Hello. Hello, sir. हाँ जी. Sir, Morning. am I audible? Good morning. अभी मैं Sir, ये 10 पूछ. मिनट में कॉल, मैं ऑनलाइन मीटिंग में 5 मिनट में फ्री हो रहा हूँ अभी. लिली वो कॉल ले रहे हैं तो 2 मिनट हाँ Okay. वेट यस करें. प्लीज लिली जी बोलिए. No. हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि सर जब हम 3 जनरेशनल जीनोग्राम डिजाइन करते हैं किसी भी फैमिली का, तो उसमें हम एक्सटेंडेड फैमिली कंसिडर करते हैं क्या? जैसे जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली है तो सिर्फ वो ही दिखाएंगे या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी दिखाएंगे? नहीं, जब जीनोग्राम कितना बनाएंगे करता है आपके ऊपर कि व्हाट टाइप ऑफ फैमिली यू आर टू एक्सप्लेन देयर. जॉइंट फैमिली, जस्ट यू गो बाय जॉइंट फैमिली ओनली. ओके. यस. जैसे 3 जनरेशनल जीनोग्राम में मैं एक मेरे एक्वेंटेंस से भी प्रैक्टिकल कर रही थी जिसमें जीनोग्राम चाहिए था. ही इज एल्डरली इंडिविजुअल, 72.
तो उनका जब 3 जनरेशनल जेनोग्राम बनाएंगे तो उनके भी जो ब्रदर्स सिस्टर्स या उनकी जो फैमिली वो भी हमें शो करनी है, अगर उनके Yes. थ्रू उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड है फैमिली में तो। If they are connected, only then you can show their further extended family. Okay. Otherwise, you restrict yourself for the joint family only. Okay, all right, sir. And मान लीजिए जैसे they like in old age लोग जैसे अपने बच्चे के घर चले जाते हैं, वहां रहते हैं अपना घर छोड़ के, मान लीजिए अपने सन के घर में शिफ्ट हो जाते हैं कुछ, तो फिर वो जेनोग्राम में लाइक हाउस होल्ड शिफ्ट हुआ है तो वो कैसे शो करेंगे? Can you या old वो age में कोई इमीडिएट शिफ्ट कर फैमिली, जाते कहाँ? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो अपनी ऑल देयर लाइफ वो दिल्ली में रहे हैं, पर अभी 2 इयर्स पहले कोई वो अपने बेटे के पास मान लीजिए मोहाली शिफ्ट हो गए, तो जब हम जेनोग्राम में शो करेंगे हाउस होल्ड, इमीडिएट हाउस होल्ड या कुछ, तो क्या वो मतलब ये जहाँ अभी शिफ्ट हुए जिस सेकंड, जैसे मान लीजिए बेटे के पास शिफ्ट है तो वो उनकी फैमिली में Obviously they are part and parcel of the household. तो जो बाकी मेंबर्स है सिर्फ फिर उनको आपका शो करने की जरूरत geographically पॉइंट चेंज हुआ ना, इमोशनली सोशली यू आर कनेक्टेड ना. है। हाँ जी, Geographical shifting है सिर्फ ना, emotionally, socially, economically, every point of view are connected. Only geographically you are shifted. Geography अगर shift, if it is only geographically shifted, even then you can consider them as a part and parcel of your household. ओके, सो वो रिलेशनशिप्स शो कर सकते हैं फिर Obviously you are related. That does not mean you boycotted all the people and you shifted to someone else and thereafter no connection. सिर्फ जो जेनोग्राम में रिलेशनशिप शो करना है उसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज क्या बोलते हैं लेजेंड है या कोई स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होते हैं? जेनोग्राम तो है, पर जो रिलेशनशिप पार्ट है कि हम अपने फॉर्म कर सकते रिलेशनशिप है, स्टैंडर्डाइज कुछ भी नहीं है उसमें. नो. तो उसका कोई सिंबल्स होते हैं? यस कैरी ऑन. सर उसके कोई सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा किसी से क्लोज कनेक्शन है या मेरा किसी से झगड़ा है घर में या किसी की बनती नहीं है आपस में, तो जैसे सिंबल्स होते हैं, तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है या और सिंबल्स भी शो कर सकते हैं जैसे कोई रिलेशनशिप्स के बारे में? You can go for with other symbols. This is depend on you. ओके. Yes. फिर वो मतलब शो कर सकते हैं उसके अंदर ना कि हमने ये सिंबल इसलिए यूज किया है. You can depict. ओके. और ओके सर, तो जेनोग्राम में 3 जनरेशनल में जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको शो कर सकते हैं. Yes. ओके सर, थैंक यू. अच्छा सर, वन मोर क्वेरी कैन आई आस्क यू? सर, हेलो. Yes, go ahead please. या सर, सो जस्ट वन क्वेश्चन मोर. जो सिनॉप्सिस सबमिशन एंड चेकिंग का है, प्लीज उस पर कुछ अपडेट दीजिएगा. Synopsis submission checking of your minor project. मिनी रिसर्च प्रपोजल. हाँ, माइनर मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट. उसमें आप यही करेंगे, आप ईमेल करेंगे, हम आपको चेक करके वापस देंगे और उसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं. ओके, फिर वो चेक करके आप जो देंगे वो उस पे हमने पूरा कंप्लीट करके पूरा फिर एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना आपने अराउंड 80-70 पेज का. ओके, और फिर वो रीचेक के लिए आपको देना होगा? वो फिर सबमिट करेंगे, साइंस विल करा के हमारे, फिर फर्दर रिव्यू को सबमिट करेंगे आप. ओके, तो क्या सेंटर्स ओपन है या फिर सब कुछ ईमेल? अभी बंद है सेंटर, अभी जब तक लिखेंगे, जब तक ऑनलाइन सबमिशन होगा वो भी ऑनलाइन सबमिशन होगा. ओके सर, ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय बाय. बाय सर. थैंक यू. ओके जी. ओके. थैंक यू डॉक्टर साहब. ओके सर, नमस्कार. Sir, I have one more doubt. Please, may I ask? Sir, Go ahead. Hurry up. Sir, this time it is as per the instruction due to COVID pandemic time. In case of mini research, we have to work on secondary data only. Am I right? Yeah, you are absolutely right.
On case of secondary data, we have to collect data from books, from nets, and from. We do not need to visit individual. Am I? No need, you can get it online. Yes. So online data, whatever we are showing as secondary data, we should attach the necessary evidence on behalf of that on our work, You on our keep, research. you know, when you are developing any online survey, and the online Yes. survey, when you close that survey, Yes. automatically that generates some diagrams there. And But you have to if, put all these diagrams taken yes, from the Google survey, for example. suppose someone did online work on mental status examination throughout the That's world why and I'm then telling you, online survey, this is called online survey data collection, yes, yes, right? So yes. it will generates the bar diagram there, and you attach the bar diagram generated via online. But sir, in practical, I did survey throughout the world by teleconferencing, right? So Even then, they will develop your bar diagram. You have to develop the bar diagram. You have to mention. You have to attach some proof of there. yes, I got a submission certificate. Did I did this work? That much only I have, nothing else. Then you attach that one. That will be that will also be the showing the proof. Yes, that I worked that field and did the Yes, survey. yes, you attach that one. Yes, and if I did work on a specific field, that organization should give me a permission certificate also. That should Yes, be also. It is that can be. That essential, can no? be. That can be. Yes. Otherwise, without permission, we cannot work on any No, no, organization. no, no. You cannot. You cannot. Okay, sir. Sir, one more thing. In this case, since we are learner, we are not able to visit it in this corona pandemic period in hospitals, mental hospitals, psychotic wards. So here we can select the cases which are non-diagnostic, diagnosed by the psychiatrist. Am I right? Obviously, you have to take this cases online only. No. I'm not talking about mini research. I'm talking about cases or case history regarding our mental disorder, Non-diagnostic MCFT. cases, obviously, you select non-diagnostic cases only. Okay. Because the person knows they have problem, but never they went to the psychiatric or never psychiatrics diagnosed them. They have Even then, you can specific. take the cases that such type of cases. Yes, sir. Thanks a lot. And in this Thank you. time, should we attach their photos also? Whatever No. proof you are getting online, you can attach the proof. But if I do not have any proof, rather than Something you photograph, might then having, some interaction you might having, some discussion you might having, some communication you might having, you attach any proof. so here only fair we have to attach, or rough also we need to attach. Wire wrap means I'm asking you send some email, you communicate, you are discussing, you can record the discussion, you can attach that one, you can record the discussion on your telephone. Okay. Soft copy, you have to submit the soft copy, right? JPG फाइल बनेगा डिस्कशन का, आप ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी को सबमिट कर दें आप. Okay, मुझे समय करना सर, क्योंकि अगली मीटिंग की तैयारी करनी है. ओके बाय बाय सर, बाय बाय, थैंक यू. कुछ विषय होंगे तो बाद में रख ली जाएंगे. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू ऑल. थैंक यू सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद. और इसी प्रकार आपकी जो ये काउंसलिंग है अगले 2 दिन भी जारी रहेगी. सेम समय है, सेम कोड है. सर इनकी अटेंडेंस लेते हो ना आप, रिपोर्ट बनाते हो कि नहीं? हाँ सब है. चलो ठीक है सर, थैंक यू. ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे. Thank you, sir.